Assalamu alaikum guys. Welcome back to Civil Engineering 24/7 YouTube channel. In today's video I will tell you basics of structural analysis part 2. In this what happens, there are some frames from start to the end. So there is a sway frame and there is also a non-sway frame. So we use slope deflection method and moment distribution method in structural analysis. But in this, for the non-sway frame, we follow the procedure for the beam. As usual, it continues for the frame. I mean to say that the procedure which we follow for the beam calculation, we will follow for the non-sway frame, right? But what about this sway frame? Then it is a different, totally different procedure. तो मतलब जब स्वे और नॉन स्वे का जो है डिफरेंस मालूम हो गया है, तो जब नॉन स्वे में हम लोग जो है बीम में जो कैलकुलेशन इस्तेमाल करते थे वही नॉन स्वे में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब स्वे फ्रेम की बात आती है तो इसका प्रोसीजर अलग हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी सम स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए. सो we follow these conditions for the slope deflection method, moment distribution method and stiffness matrix method. But stiffness matrix method is so far away, but we need to see what are the conditions. First of all, these four conditions that is main in our structural analysis for doing for sway frames and non-sway frames. So let us see. First of all, this one is one kind of sway frame. How it is one sway frame? Because देर इज़ ए लोडिंग अप्लाइड फ्रॉम दिस साइड. इधर से लोड आ रही है जिसकी वजह से दिस टू कैन बी सेड एज कॉलम्स. वेट, लेट मी राइट. This two would be your columns. Okay, the two columns. This is suppose like a slab. This is a frame. These are two frames. This is sway frame, this is non-sway frame. I will say the reason why it is like that. Swaying is because there is a load acting like this. मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे दो कॉलम है ना, ऐसे वाली, तो इसमें होता क्या है कि सपोज़ अब यहाँ से एक लोड है. अब एक लोड ऐसे ऐड किया तो क्या होगा, दो कॉलम भी इक्वल ही मतलब डिफ्लेक्ट करेंगे. यहाँ पे ऐसे इक्वल डिफ्लेक्शन हो जाएगा. ओके, देर विल बी इक्वल डिफ्लेक्शन इन दिस बोथ कॉलम्स. ओके, देन there will be equal deflection because there is horizontal load acting in this sway frame. What is sway frame? Due to lateral deflections, the load occurs due to lateral deflections is called the sway frames. Okay, it is a sway frames, right? Let's move towards our next frame, that is nothing but yours like this. This is suppose your A point. Okay, this is your B point, this is your C point. So what happens here, मैं आपको clearly explain करता हूँ अभी. When there is a load acting from the right side, this is horizontal load also acting, but here there is one support, that is your fixed end. It will resist the load, so it will not sway. मतलब जब यहाँ पे दो लोडिंग कंडीशंस हैं, सपोज पहले की तरह एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जब इस पर कुछ लोड अप्लाई होगा तो एक गिरे, ऐसे होगा नहीं, ऐसे नहीं मतलब सोए होगा, ऐसे नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लगा है तो इसको सपोर्ट कर देगा. जब वो बेंड होगा इस एरिया को सपोर्ट कर देगा. दैट्स वाई इट इज़ ए नॉन स्वे फ्रेम. ओके, देर इज़ here there is sometimes unequal what we call symmetrical supports, so that's why sway frames will occur. Okay, let's see in depth what happens in next. I will explain you this also. Then what happens is next is सो वॉट, इसमें ईजी है गाइस, समझने का कुछ नहीं है, लेकिन जब ऐसे कॉलम्स हैं अगर डिफ्लेक्ट होते हैं तो वो स्वे फ्रेम्स है. इट इज़ स्वे फ्रेम्स. इफ़ द कॉलम्स आर लाइक दिस बट ड्यू टू द फिक्स सपोर्ट इट विल नॉट गेट स्वे. आपको इसी से याद रखने के लिए मैं एग्जांपल फिर से बताता हूँ. अगर डिफ्लेक्ट होता है वो स्वे है, अगर डिफ्लेक्ट नहीं होता है वो नॉन स्वे है. ओके, डन. इफ़ इट डिफ्लेक्ट्स इट इज़ स्वे, इफ़ इट नॉट डिफ्लेक्ट्स it is non-sway. So due to lateral deflections generally we get sway conditions. Okay, hope you're understanding. Now let us check fastly the conditions towards these problems. So let us see first condition. Let us see, first of all let me tell, if these conditions are satisfying then it is non-sway frames. If these conditions are not satisfying then it is sway frame. Okay, अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये स्वे फ्रेम है, अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो स्वे है और ये नॉन स्वे फ्रेम है. ओके, डन. लेट अस मूव. तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है. फर्स्ट कंडीशन है चेक फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग.
चेक फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, इसमें फर्स्ट हम नॉन स्वे देख लेते हैं. ओके, लेट अस सी फर्स्ट नॉन स्वे फ्रेम. Check for symmetrical loading. There is symmetrical loading in both sides. Okay, so this condition is satisfied, then this is a non-sway frame. Check whether EI value is same. EI value की same है. EI EI EI. So ये second condition भी satisfied. So second condition is also satisfied. Check for vertical members length. Length is also same for the vertical members. Third condition also satisfied for this. Check whether the supports are symmetrical. Supports are symmetrical. दो supports भी symmetrical है, same है. Symmetrical का meaning क्या है? Same. Okay. Symmetrical means same. Next, this one. Then here, let's see. Check for symmetrical loading. Yes, there is symmetrical loading with some WW with 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Okay. Then let us check whether EI value is same. 2I, 2EI, 2I. Yeah, it is same. It is satisfied. Check whether vertical members length. It is same. Okay, this also satisfied. Check whether the supports are symmetrical. Supports are symmetrical. Satisfied fastly. This third conditions. Now here, let us check in sway frames. Okay, in sway frames. Check for symmetrical loading. Is there symmetrical loading? No. If we cut the section, बीच से अगर काटते हैं सेक्शन को तो लोड यहाँ से एक्ट हो रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब कि ये स्वे हो जाएगा, मतलब कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, गिर जाएगा, स्ट्रक्चर गिर जाएगा, कॉलम्स गिर जाएंगे. तो नेक्स्ट सी सेकंड वन. इसमें और क्या है? चेक फॉर वर्टिकल मेंबर्स लेंथ. वर्टिकल मेंबर्स लेंथ तो सेम है, लेकिन ये जो हमारा सिमेट्रिकल लोडिंग है उसकी वजह से वहीं वो प्रूफ कर दिया है कि स्वे फ्रेम. Check. Okay, for this frame, let us check the conditions. Check for symmetrical loading. Okay, symmetrical loading is there. Check whether EI value is same. 2EI, 3EI. No, the value is not same, because here 2EI is mentioned, here 3EI is mentioned, and here I is mentioned. So it is not satisfying the condition. Check for the vertical members length. Okay, check whether the supports are symmetrical. Supports, everything is symmetrical, but EI value is not satisfied. So these two conditions are not satisfied here, so it is sway frame. If the conditions is satisfied, it is non sway frame. So इधर होता क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं यहाँ पर कि इसमें ये देखिए, ये एक फ्रेम है और आपको ये फ्रेम, दो फ्रेम भी थोड़ा सेम लग रहे होगा ना. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट इसमें क्या है, ये हिंज्ड सपोर्ट है. हिंज्ड सपोर्ट में एक लोड यहाँ से, वन लोड विल एक्ट इन वर्टिकल, अनदर लोड विल एक्ट इन हॉरिजॉन्टल. सो and one more is there here, rotation also will be. So what will happen when there is loading occur from this side? Sway, the columns will sway, but fixed support can handle that, so it is non-sway frame. So if we see, check for symmetrical loading, then it is totally same, that there is symmetrical loading is there, but there is fixed support, so the columns, when it will get sway, the fixed support will handle here, because here इधर से वर्टिकल लोड भी एक्ट हो रही है, इधर से हॉरिजॉन्टल लोड भी एक्ट हो रही है, और इधर रोटेशन भी है, जिसकी वजह से संभाल लेगा ये डिफ्लेक्शन को. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. इसमें क्या है, रोलर सपोर्ट दिया गया है. रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है, जब आपको यहाँ से कुछ लोडिंग अप्लाई की है तो क्या होगा, ये कॉलम जो है स्वे हो जाएगा, क्योंकि ये खिसक जाएगा. ओनली इन हॉरिजेंटल में एक्ट होता है यहाँ पर लोड, यहाँ पर वर्टिकल लोड नहीं एक्ट होता, बिकॉज नियर रोलर सपोर्ट देर इज ओनली वर्टिकल लोड and horizontal load is act, not only horizontal load, only horizontal load will act, not vertical load, sorry. So that's why the structure will get sway. Next, coming towards our this one, here what happens, here the unequal length. So check for vertical members length. Here it does not satisfy. See, check for vertical length. Here check for vertical length. The vertical length is unequal. Okay, unequal length, so that's why it is not getting sway. Let's see here. Then here what happens is, we are having two fixed supports, and here also fixed, but when we apply the load, it will not get sway. So it is because of there is a fixed support, it will handle the sway. Okay, I think you are getting. Next, coming towards this one, here also we are having same members, and here we are having one more UDL, but it can handle because there is a fixed ends, so it is also condition satisfied, so it is non-sway frames. Next, coming towards this one, what is this? This is roller support.
in roller support only I told you horizontal load will act, not the vertical. So when there is an we apply load, what happens suddenly? This will deflect like this. It will allow deflection. It can't resist the load. Whereas in the fixed support, it will resist the load, but it is also called non-sway frame. Next come let's see next session. Here what happens in this frame? It is a non-sway frame. How? Because here what is there? Fixed support is there. Here vertical load is also acting, and also horizontal load and rotation. So it will handle when the frame will get some deflection like this. It will handle, and it will not let the structure get sway. Okay, तो structure कोई गिरने नहीं देगा. ओके, होप आपकी वीडियो आज समझ में आ गई है. शुक्रिया. और जो है वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा, एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़ गाइस. थैंक यू.